Yes, all the May 23 students appearing for CA final exams on 7th May. आशा करता हूं कि आपका इस वक्त एग्जाम्स अच्छा चल रहा होगा. All right, I hope that your exams are going great. So this is CA Pramesh Kanabar, your audit professor, giving you the guidance on how to deal with audit subject on the day of exams. And whatever has been your experience in the first two papers, first tip is always going to be to forget that particular experience, whether good or bad. All right, and please ensure that you are in a stable mind zone so that आप audit paper के साथ deal कर पाओ. There is a golden opportunity that we have a study leave of 2 days. So 4th May, I'm calculating that around 7 p.m., no matter wherever you stay, I think around 7 p.m., 7:30 p.m., you will be available to start your preparation. And then on 7th May, that is the exam day. On 7th May, that is the exam day. What I'm doing is that I'm also calculating some 3 hours, 30 minutes over there. All right. So we have a golden opportunity, beta, this time to ensure that you clear audit paper. I will be covering the timings that you need to allocate to topics. Along with that, I will also tell you some tips that are required to clear your paper. All right. Now, on 4th May, that is at 7 p.m. से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 3 hours 30 minutes. वेरी सिंपल. 4th May को आप ऐसे टॉपिक्स नहीं ले सकते जहां पे मेमोरी टेक्निक रिक्वायर्ड है. आई रिपीट, यू कैन नॉट टेक सच टॉपिक्स ऑन 4th May वेयर मेमोराइजिंग इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन टेक ऑन 4th May? Topics like investigation, due diligence, topic like audit of CFS, and then 6 to 7 standards in auditing, which are your favorite, all right, where you don't have too much of pressure. Like it could be 505, 580, 501, 510, something with respect to audit report, all right. तो जो आपकी फेवरेट स्टैंडर्ड्स है, जहां पे मेमोराइजिंग टेक्निक नहीं है, जहां पे फ्लो चार्ट से हो सकता है, एंड इफ यू आर माय स्टूडेंट, यू नो व्हिच स्टैंडर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट. वो स्टैंडर्ड्स आप ले सकते हो. Wherever there is a flow chart, there is no memorizing technique, you can take it up. All right, you can take up topics where like audit of CFS, investigation, due diligence and stuff, where you don't require memorizing technique. Okay, but हाँ, forensic audit अगर आप बोलोगे, then in that case you will require some memorizing technique. All right, so please ensure that without memorizing technique वाले topics आप इस दिन पे ले लो. Around 3 hours 30 minutes working day that I've calculated. Now comes very important set of days. Now 5th May. Working hours that I'm calculating is 13 hours. I hope that is fine. Some people may go to 15, but I hope that no one is going to go less than 13, at least on 5th May. 5th May को आपके सारे favorite topics ले लो. Take professional ethics, take company audit, take CARO 2020. Something that motivates you a lot. Please take those topics. It could be peer review, quality review also. Okay, although in my plan it is on the next day. So according to my plan, it is professional ethics, company audit, CARO and remaining essays खत्म कर दीजिए. सारा कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपने 5th May को खत्म कर दिया तो 6th May बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए. सो इफ प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट एंड कारो इज इंटरेस्टिंग, देन प्लीज टेक रिमेनिंग एसेज आल्सो. एंड एसेज में अब आप क्या कवर करोगे? यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग. सो देयर आर टू ऑप्शंस. ऑप्शन 1, व्हाटएवर इंपॉर्टेंट यू हैव मार्क्ड इन योर सेल्फ स्टडी, यू प्लीज कवर दैट. ऑप्शन 2, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप टेंशन में हो ना व्हाट टू डू, then in that case whatever are the concepts covered in my Brahmastra revision video, which you will find on my Telegram channel, all right, that you can cover it up. तो अगर आप ये टेलीग्राम चैनल पे रहते हो, alright, just a minute, okay, then in that case you can easily, ये टेलीग्राम चैनल में अगर आप रहते हो, then in that case you can easily excel in it, alright. and आप देखोगे कि कितना सारा कंटेंट है इसके अंदर, and सारे प्लेलिस्ट लिंक्स वगैरह सब कुछ है, and so you can ensure that जो remaining essays है उसमें at least कितना तो आप कवर कर लो. Are you listening? Yes. Okay. Now I move back to that particular strategy. So 5th May, you will keep everything interesting, professional ethics, company audit, CARO, but you will also cover some essays where you're not comfortable and stuff, so that you are in a good zone. 6th May को we will ensure कि ऐसे हर एक टॉपिक को कवर करें जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड आप उसमें मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे. Peer review, quality review, amendment है peer review, already videos are posted on my YouTube channel. Quality review, full marks, bank audit, भले अगर सब कुछ कवर ना कर पाओ तो मैंने रिवीजन वीडियो में जितना बोला उतना कवर कर लो. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थोड़ा धीरे धीरे करो, एंड रिमेनिंग पार्ट यू कैन गो लिटिल फास्टर. ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, अगेन अमेंडमेंट टॉपिक्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. Audit of insurance, you are not very comfortable, please ensure you see my revision video and cover at least that much part, or at least the module questions and stuff. Then audit committee, obviously you need to ensure that you are covering it. But however, अगर आप मेरा audit committee का वीडियो देखोगे तो जो board of directors के composition वाले जो क्वेश्चन होते हैं, audit committee composition वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग various committees जो बनानी है जो क्वेश्चन है, and module questions, इतना अगर कर लोगे तो भी चलेगा. Then tax audit में obviously you cannot cover everything over there.
But again, it is going to be a 5 to 8 marks impact on your paper. If you're not able to remember the clauses, it is fine. It is fine. It is fine. Don't take too much pressure on that part. But then what you're going to do is you're going to ensure that जो भी मेरे videos में मैंने cover किया है, at least उतना आप कर लो. उतना भी नहीं हो पा रहा है, then in that case, all right, just one reading of Form 3CD, one reading of Form 3CD and module questions. At least that much you're going to do. Forensic audit, which is now known as forensic accounting, then in that case you are going to ensure that वो एकदम अच्छे से कर लो. उसमें जितने भी क्वेश्चन है, गिन के 10 क्वेश्चन है, उसमें से कोई ना कोई एक आता ही एग्जाम में. Then liabilities of auditor, automated environment and other topics. Liabilities of auditor में section oriented रखो. Automated environment में it should be like question answer per question. You should know at least 2 points. That's it. All right. And then the remaining topics over there that you are going to cover on 6th May. 7th May के दिन पे, all right, you are going to ensure that you revise the RTP of May 23. You are also going through the professional ethics clause numbers, company audit section numbers, Caro clause numbers, tax audit at least once, clause numbers and stuff that you can do, all right. And बाकी आप एक बार वापस से प्रोफेशनल एथिक्स एंड कारो को अच्छे से रिवाइज करके जाना, because you are going to score around 16 to 18 marks from that particular whole syllabus, all right, ताकि आप पेपर में एकदम कंफर्टेबल हो when you are going over there. Please ensure that numbers, numerical limits, जो थोड़ा बाय हार्ट वाला पार्ट है वो इस दिन पे रखो आप, but nothing more than 3.5 hours I think you will be able to spare. Now moving ahead, important tips for writing audit paper. मैंने कितने सारी certified copies evaluate की, and from that I have come to this particular set of tips, and I am putting all my experience into these tips. First, boss, when you're writing questions, right, it has to be like question 1A, no 1B, 1C, everything has to be on a different page. This is page 1, page 2, page 3. All right, आप क्यों eco-friendly हो रहे हो वहां पे? And why do you want to write 2 questions on a single page? Don't do that. अब सबसे पहले attempt क्या करें? MCQ करें कि brief answer करें? ये तो मैंने आपको brief answer का tip दे दिया. According to me, what you should do is the sequence should be first phase MCQ solving 45 minutes. And then you are going to go to the second phase, all right, and you're going to attempt your confident questions. अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बहुत important बात का. MCQs 45 minutes, finish it off. You are not going back to the MCQs again. Then suppose question 1A, B, C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, and so on. Correct? अब let us say that you are comfortable in 1B, 2A, 2C, 3B, 4A. ऐसा आपने डिसाइड कर लिया कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. तो पहले ना आप क्वेश्चन नंबर 1B कंफर्टेबल हो तो फर्स्ट पेज पे 1B लिख दो. ओके, देन सेकंड पेज पे क्वेश्चन 1A लिख के लीव द स्पेस, लीव दैट पर्टिकुलर पेज. और ये मत सोचो कि 2 पेज लगेंगे तो अरे जो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं वहां पे 2 पेज कैसे लिखोगे. सो क्वेश्चन नंबर 1A, then 1C. Then आप अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन 2, then 2A, you are confident, write it. Then 2B, 2C, एक पेज पे उसका नंबर लिख के छोड़ो. तो आपका जो फर्स्ट फेज है उसमें एमसीक्यू कर रहे हो, सेकंड फेज में यू विल बी अटेम्प्टिंग द कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस, ऑलराइट. दैट विल एंश्योर दैट एटलीस्ट यू हैव वॉन हाफ बैटल. प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी ऑडिट का जो स्टूडेंट है फाइनल सीए में, उसको एटलीस्ट 35-40 मार्क्स का जो ओवरऑल 100 मार्क्स में से 35-40 मार्क्स का तो कॉन्फिडेंस होता ही है. देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग इट इनफ टाइम? प्लीज एंश्योर दैट यू आर फिनिशिंग इट ऑफ. Then in the third phase, what you're going to do is you're going to attempt the questions, all right, where you are not that confident, all right. So जो remaining पूरा question हो जाता है. For example, in 30 marks MCQ, you have finished off in the first 45 minutes. You have finished it off in first 45 minutes. Then आपका 70 marks बच जाता है. उसमें से 30 marks you are very confident, but अलग-अलग question number में अलग-अलग सब question है. So please ensure that वो लिखो और बाकी के आप space छोड़ दो. And then let us say around 35-40 marks, you're not that confident. You give your around 60-70 minutes to that, and please try to fill up the relevant points. अब सुनो, जिसमें not confident हो, where you are not that confident, in that you will get marks only for writing relevant points. तो समझो question 1C में you are not confident. तुमको एक point याद आ रहा है, वो आपको पता है 100% suggest answer में, उतना लिखो, leave that question, go to the next question. Anyways, for writing too much content, they are not going to give you marks. They are going to give you marks for writing, yes, relevant content. So please ensure that you are following this, and then your focus should be कि मैं 100 marks का पेपर तक पहुंचूं कैसे.
All right, come what may, so that I don't get November. How do I reach to that 100 marks का line? By writing relevant points. और समझो relevant points भी याद नहीं आ रहे, फिर तो भगवान का नाम लेकर लिखो जो लिखना है. But you are going to come out of that examination hall by attempting full 100 marks paper. I hope I am clear with that. Yes sir, yes sir, yes sir. और ये जो आपको पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ यू विल गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. एक मास्टर स्ट्रेटेजी करके थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा. 45 डेज का स्ट्रेटेजी था विच आई हैड अपलोडेड बिफोर 45 डेज. उसमें लास्ट के 2 पेजेस में ये सब है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एनी रिवीजन मटेरियल दैट यू नीड, इफ यू एक्चुअली जस्ट स्क्रॉल थ्रू माय टेलीग्राम चैनल यू विल गेट इट. एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके अंदर रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे. व्हेन इट कम्स टू डाउट सॉल्विंग, जितने भी मेरे इन हाउस स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है. आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए. ये 2 दिन आपको जितना मुझे परेशान करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कीजिए. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रेडी फॉर दैट. ऑलराइट, मैंने वाइफ को भी बोल के रखा है दैट प्लीज डोंट कॉल मी फॉर दीज 2 डेज. जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो डू नॉट हैव माय व्हाट्सएप नंबर बिकॉज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इट कैन नॉट बी मेड पब्लिक. देन इन दैट केस यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन माय मोबाइल ऐप. There's a chat box over there. Do not worry. I will be proactive on my app. I will reply to your queries also. All right. So do not worry about it. आप एक बार effort तो लीजिए and then you try and experience what kind of support I'm trying to give you. All right. So all the very best. Please ensure that you are not letting yourself down. पेपर अच्छे से लिख कर आओ. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. Feel proud on yourself. No, have some relaxation with this thought that you are doing a tough course, all right, and you are not spending 15-20 lakhs of your family behind an MBA course, all right. So you are trying to save money of your family, and in doing tough things there it may take a little bit of more time, but the end outcome is going to be great. All right, so all the very best. I am with you, don't worry about it.